Bismillahirrahmanirrahim. Today I'll be talking about endoscopic sleeve gastroplasty and how we are going to manage it. So we all are aware of the pyramid of obesity. It starts with nutritional and behavioral modifications. The GLP-1s have changed the whole landscape quite significantly with the pharmacotherapies. We've got various endoscopic therapies, and surgery is the main stay of treatment for morbidly obese patients. But we have recently been to this ECHO conference on obesity in Turkey, and the key thing that we noticed there was that patients should be treated on a multidisciplinary approach. So each one of these pieces of the pyramid are not exclusive, mutually exclusive. They're all part of the management for obesity. So endobariatric therapies are quite vast, and they're quite varied. They can be gastric approach, they can be duodenal approach, they can be post-bariatric procedures that can be offered, or they can be cross-sectionally or anatomical approach as well. So endoscopic sleeve gastroplasty is the one that has the most evidence, and I'll be talking about that. So essentially, it is a full thickness suturing that can approximate the gastric walls together, and it reshapes the stomach from being a bean-shaped organ to a tubular form. And that reduces the gastric volume and helps to promote weight loss and improve obesity-related comorbidities. So I've just got a video which will tell us how the procedure is done. But essentially, the idea is that we can stitch the stomach from the inside with an endoscope. It's a device that's called the Overstitch that was developed by Apollo initially, and then was later taken over by Boston Scientific. It's a very well-designed piece of kit. We can place the kit inside. There's a tissue helix which we can use to pull the stomach wall inside and make a full thickness suture. So it is so full thickness that if you actually see the stomach from the outside, you will be able to see the thread going from there. And it's because of that reason that when we apply some pressure, something that we call cinching, it approximates the stomach wall and reduces the gastric volume. And multiple sutures can be applied to reduce the stomach capacity by up to 80%, and that then leads to 15 to 20% weight loss in the long term. So the main trial regarding this is the MERIT trial that included 209 participants and was published in 2019, which showed the efficacy and safety of this particular device. And what it showed was that at year 1 and 2, you could expect 15 to 20% weight loss. But more importantly, it showed that at 5 years, the patient maintained the 16% weight loss. And more recently, an abstract has been published which shows that up to 10 years, the patients maintain their low weight. There's also improvement in comorbidities, including type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, etc., as well as MASLD, obstructive sleep apnea, and PCOS. Complication-wise, it's a very safe procedure. There are mild complications, including nausea, vomiting, and tummy pain that happen in the first 48 hours, but they can settle. The serious complications are very rare, less than 2%. Bleeding, perforation, intra-abdominal collections can occur, but in worldwide, wherever these complications have happened, they have been managed conservatively, and none of these patients actually needed surgical intervention. So because this is part of the Endocinema, I have invited our first patient. You can see Jamshed here. He's sitting just in front. The camera is on him. So he works in the pharmacy department at our hospital. There is a test called the friend and family test. So never offer something to your patient that you wouldn't put on your own. So we offered this first on our own, and he was brave enough to stand up, and do the procedure for us. Be a participant, a volunteer on it. So he was our first endoscopic sleeve gastroplasty patient, and our hospital has made a video on him, which he has not seen yet, but I will just play it here.
मेरा पहले वज़न 126 था। वज़न ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता था। जैसे नमाज में कुर्सी पर बैठ के पढ़ता था। ये मैंने प्रोसीजर इसलिए कराया कि लोग मुझे मुख्तलिफ नाम से पुकारते थे। एग्जांपल ले लें, मोटा, बबलू, भालू। मुझे शर्म आ रही थी किसी घर में जाते हुए, किसी पार्टी में जाते हुए, किसी की शादी में जाते हुए। जमशेद हमारे पास ज़्यादा वेट मोटापे के परेशानी के साथ हमारे पास आए थे। इनको मेन इश्यूज़ ये थे कि इन टाइम के साथ साथ इनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था। 120 से ज़्यादा इनका वज़न हो गया था और किसी तरह से ये वज़न कम नहीं कर पा रहे थे। इनको इसकी वजह से साइकोलॉजिकली काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहे थे। इनके अंदर ख़ानदान में डायबिटीज़ भी थी, तो ये प्री डायबिटिक हो रहे थे और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही थी। तो बहुत ही स्लिम था, तो ये 10-12 साल से मेरा वेट बढ़ा है, वो भी फास्ट फूड की वजह से और होटलिंग की वजह से। एक्टिविटी मेरी कम थी। मैं कभी कभी वॉक वगैरह करता था तो बहुत जल्दी थक जाता, आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। तो मैंने एक टेबलेट आती है वेट लूज़ करने के लिए, वो मैंने शुरू की। तो मेरे 3 से 4 महीने में सिर्फ 1 किलो वज़न कम हुआ है। डाइट पे गया हूँ तो मेरे जो घुटने हैं वो पेन करने का लग गए थे, पाँव में पेन शुरू होना हो गया था। जमशेद अहमद मेरे बड़े भाई हैं और इनका वज़न बहुत ज़्यादा था। इट वाज लाइक 126 केजीज़। पूरी फैमिली इनके वज़न की वजह से बहुत परेशान थे। आई वाज आल्सो हेल्पिंग जमशेद भाई इन लूजिंग वेट। मतलब मैं इनको बहुत मोटिवेट कर रही होती थी कि आप एक्सरसाइज करें, गो फॉर अ वॉक, ईट हेल्थी। लेकिन सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बावजूद भी नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा वज़न कम। वेट रिडक्शन के लिए बेस्ट अप्रोच डाइटिंग होती है, लेकिन बाज़ लोगों को डाइट से वेट लूज़ नहीं हो पाता। मेडिकेशंस का ट्रायल हम अक्सर मरीज़ों को ऑफ़र करते हैं, लेकिन उनको साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से वो इससे वेट अपना कम नहीं कर पाते। ऐसे मरीज़ों को हम एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी ऑफ़र कर सकते हैं। अक्सर मरीज़ों का जो वेट जिनको हम ये प्रोसीजर ऑफ़र करते हैं उनका BMI 30 से ज़्यादा होता है या फिर 27.5 से ज़्यादा हो विद कॉमोर्बिडिटीज़, उनको और बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, वेट की ज़्यादती की वजह से हो, तो हम उनको ये प्रोसीजर ऑफ़र कर सकते हैं। अगर मरीज़ों का वेट बहुत ज़्यादा हो और उनका BMI 50 से ज़्यादा हो तो फिर हम उनको सर्जरी आइडियली ऑफ़र करते हैं, लेकिन बहुत से मरीज़ सर्जरी की तरफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं जाना चाहते और ऐसे मरीज़ों को भी हम एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी का प्रोसीजर ऑफ़र करते हैं। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक एंडोस्कोपी का तरीका है जिससे हम मैदे को अंदर से सिलाई के ज़रिए छोटा कर देते हैं 80% तक, और उससे फिर पेशेंट का ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि उसका जो रिस्क है बाकी बीमारियों का, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, वो कम हो जाता है। ये आम सर्जरी से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। पेशेंट उसी दिन आता है, प्रोसीजर करा के अगले दिन घर चला जाता है। इसमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्कार नहीं होता, प्रोसीजर मुंह के ज़रिए किया जाता है और ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो सर्जरी की निस्बत बहुत कम है। जमशेद के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको हमने डाइट और मेडिकेशंस और सर्जरी ऑफ़र की थी, लेकिन वो सर्जरी की तरफ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं जाना चाह रहे थे और मेडिकेशन से उनका वेट लूज़ नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी वाज अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर हिम। थैंक्स टू शिफा, थैंक्स टू डॉक्टर शहजाद रियाज। इन्होंने जो एक नया प्रोसीजर शुरू किया उसमें हमने इनरोल किया और उसके साथ ही जमशेद भाई का वज़न जो है वो विद इन 4 मंथ्स 90 पे आ चुका है। अभी जो है मैं पहले की से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं अपनी अब नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। अब मैं जो सुबह वॉक करता हूँ वो तकरीबन जो है ना 5 से 6 किलोमीटर करता हूँ, शाम को भी 5 से 6 किलोमीटर अपनी वॉक करता हूँ। अब मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया, जहाँ भी जाता हूँ पैदल जाता हूँ और मुझे पैदल चलने में अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो मेरी हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ हैं 4th फ्लोर तक मैं सीढ़ियों के थ्रू चला जाता हूँ, कोई भी मुझे थकावट नहीं होती, कोई भी मेरा सांस नहीं फूलता। पहले मोटापे की वजह से मैं अपनी जो छुट्टी है वो घर गुजारता था। जब मेरा वेट लूज़ हुआ है तो मैं अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता हूँ, कहीं भी जाना हो चला जाता हूँ, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल आती थी। जितने भी घर के बच्चे हैं, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, उनके साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर, उनके साथ खेलता हूँ। अब किसी पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, आराम से चला जाता हूँ। पहले जो है मुझे सूट डबल XL आता था, अब मैं मीडियम तक पहुँच चुका हूँ। अब ब्रांडेड सूट पहनता हूँ, पहले ब्रांडेड सूट मुझे नहीं आते थे। इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब मेरा जहन जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इस बारे में। अब कोई ज़हनी अजियत नहीं होती, अब कोई मुझे डिप्रेशन नहीं होता मोटापे की वजह से।
वेट की ज़ाती से मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं और इसलिए वेट को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए डाइट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन जो लोग डाइट से वेट कम नहीं कर पाते उनको या तो सर्जरी, मेडिकेशंस या एंडोस्कोपी की तरफ सोचना चाहिए। इन तीनों चीज़ों की मालूमात उनको लेना चाहिए। एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी एक स्पेशली पोजीशनड है मेडिकेशंस और सर्जरी के बीच में, क्योंकि जो सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी में नहीं होते, और जो मेडिकेशंस के इश्यूज़ हैं बेसिकली ये कि जब आप दवाई को बंद करते हैं तो वेट वापस आ जाता है, वो भी एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी से नहीं होते। तो आपको एक परमानेंट वेट लॉस लो कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलता है। तो दैट इज़ वाई एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी इज़ वेल सूटेड फॉर दोज पेशेंट्स। So, in summary, with regards to weight loss, we know that we should start with dietary modifications, lifestyle modifications. The pharmaceutical companies and medications that have come up have made a huge difference. We have learned that actually being overweight is not somebody being lazy. It's just their biology is different, and we need to recognize this as a disease rather than sort of blaming the patient that it's a lack of motivation or lack of willpower. Patients that have a very high BMI, they should be offered surgery. There's no doubt that surgery you can lose weight more. However, there's a lot of patients that do not wish to go to have surgery, and for them endoscopic sleeve gastroplasty is the way forward. So 3 important points with regards to ESG. The MERIT trial confirms that it is safe and effective. The JAMA trial suggests that in the long term it is more cost effective than medications, and even if you see in our country, for 2 years worth of GLP-1s is equal to one gastroplasty, which can last you a lifetime. And the third is that in this interesting study in 2019, they looked at patients whether they have surgery or not. So only 1% of the patients that are eligible for bariatric surgery actually have surgery. 99% of them do not want to have operations. And why would they want to when you've got a lovely procedure in which the patients can just stand up and walk soon after the procedure? There's no drains, there's no sad faces, they're all smiling, and they can be discharged the next day. Thank you.